हर चीज़ होती है दक्कन की कि दक्कनी पोइट्री सुनने का मौका पिछली बार आप लोगों को मिला था। आप में से जो लोग आए थे, एक नाटक का मंचन भी हुआ था। लेकिन इस बार जैसा कि भास्वती की खासियत है कि तमाम सारे लोगों को अपने बीच से ही द आर्टिस्ट अमंग अस, एवरीवन हैज सम or other form of art in them, and we do it sometimes in our drawing room, sometimes with our friends, with our colleagues. तो उस तरह से चीज़ों को निकाल करके उस एहसास के साथ और उस फन के साथ उन फनकारों को और उन आर्टिस्टों को हम लोग आज हमारे बीच में जो है उनको सुनेंगे। और सबसे पहले मेरा अनुरोध श्रीधर से है कि श्रीधर जी अगर आप अपनी कविताएं सुनाएंगे तो यहाँ से। I wanted to very quickly say a couple of words about Sridhar. Sridhar is our main technologist. He's the person who does all of our coding work. He's also the person who does all of our data work. He works from home. We catch him mostly on Gmail chat or on Skype. That's how we talk to him. Sometimes we do call him. But over the last 2 years, Sridhar has been the mainstay for our data work. Whether we want to know what the police crime records are saying, whether we want to know how to actually map bus routes, whatever it is Sridhar who does it for us. But there's one other facet to Sridhar that is not very widely known. He keeps sending poems to me on email. And he says that he shares it only with a few people. But we thought those poems were really, really good and they should be shared with everyone. And it took us a little bit of persuasion to get Sridhar to do that. Sridhar. The poem is about cities. इन शहरों की अजीब फितरत है, लोग ज़्यादा होते हैं और रिश्ते कम। जो थोड़े बहुत रिश्ते हैं उन्हें निभाने का वक्त नहीं। गुजारा कमाने में इतने मसरूफ़ हैं कि गुजारा कमाने में इतने मसरूफ़ हैं कि फिसलती हुई ज़िंदगी का होश नहीं। हर पल इतनी जल्दी है कि यादगार लम्हे समेटने की फुर्सत नहीं। जब अकेले पड़ जाते हैं तो ना कोई होता है जिसका सहारा ले सके, ना ही कुछ यादें रहते हैं जिनके सहारे जी सके। थैंक यू। Sridhar is not only a poet in Hindi, he also writes a lot of poetry in Telugu. I have no idea why he has chosen to do it only in Hindi. But we will hear from him again very soon. में वागीशन हैं, बहुत सुंदर गीत। इस गीत की लयकारी मैंने सुनी थी दोपहर में और मुझे बताया गया कि इस गीत का वादा पहले हुआ था। फिर परसों सुबह सुबह आनंद जी के पास फ़ोन आया कि वो मैं आ रहा हूँ क्योंकि उसका मुखला मिल गया है, उसकी शुरुआत मिल गई है। और वो शुरुआत का एक छंद और मुखला मैंने आज दोपहर में सुना था और मुझे एएसएफ याद आया। एएसएफ का इनॉग्रल उसमें जब करीबन 100 यूथ एक साथ खड़े होकर कविता सुना रहे थे, तो अब बहुत व्यवधान और बहुत बीच में नहीं आ करके सीधे। Well, I hope the audience know a bit of Telugu. So, I just take 1 minute to say this is a poem which tells you about the contrasts of the city, and then it ends with a kind of wishing how and what should we do for this contrasting reality. And my innate sorrow is that this city has lost its civility. That's what my entire this thing is. So how to get back? So that's what this song tells about, and in that it talks about the contrasting picture. Nagaram, 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 nagaram. Idi dhaga dhaga merise nagaram. Idi dhaga dhaga merise nagaram. Idi bhaga bhaga mande nagaram. Idi dhaga dhaga merise nagaram. Idi bhaga bhaga mande nagaram. ఇది కళకళలాడే లోకం, ఇది పలవల పోతల శోకం. ఇది కళకళలాడే లోకం, ఇది పలవల పోతల శోకం.
ఇది మెరుపుల మరకల వస్త్రం, ఇది పరుగుల పరుగుల యంత్రం, ఇది కలిమి లేమి పులిమి కనిపించే రంగుల చిత్రం, ఇది ధగధగ మెరిసే నగరం 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 నగరం. పెద్ద చదువుల హోదా నెలవవు బక్కోనికి కలల ప్రపంచం, పెద్ద చదువుల హోదా నెలవవు బక్కోనికి కలల ప్రపంచం, ఉన్నోళ్లకు బంగారు కంచం వారి నిద్రకు పందిరి మంచం, ఉన్నోళ్లకు బంగారు కంచం వారి నిద్రకు పందిరి మంచం. ఇది ధగధగ మెరిసే నగరం, ఇది భగ భగ మండే నగరం, ఇది ధగధగ మెరిసే నగరం, ఇది భగ భగ మండే నగరం. ఊరేమో ఉండమనని వేరెవరు రమ్మని అనని, ఊరేమో ఉండమనని వేరెవరు రమ్మని అనని, చిరునామా లేని మనిషి మరి వెతుకులకిక్కడ వెతికే, మరి వెతుకులకిక్కడ వెతికే. ఇది భగ భగ మండే నగరం, ఇది భగ భగ మండే నగరం. సౌకర్యాలుండే హిల్స్, సదుపాయాలుండే కాలనీస్, మేడల్లు టవరు బంగ్లాస్, డెకరేటెడ్ గేటెడ్ విల్లాస్. ఇది ధగధగ మెరిసే నగరం, ఇది ధగధగ మెరిసే నగరం, ఇది భగ భగ మండే నగరం, ఇది భగ భగ మండే నగరం. గుడిసే వాడ బస్తీ గురుతున్నా లేని స్లమ్ము, గుడిసే వాడ బస్తీ గురుతున్నా లేని స్లమ్ము, ఇరుకు మురికి దుమ్ము కానీ మొండిగా బతికే దమ్ము, కానీ మొండిగా బతికే దమ్ము. ఇది భగ భగ మండే నగరం, ఇది భగ భగ మండే నగరం, ఇది ధగధగలాడే నగరం, ఇది భగ భగ మండే నగరం. హైటెక్కుల నిక్కుల మాల్సు, 5 చుక్కల హోటల్స్, హైటెక్కుల నిక్కుల మాల్సు, 5 చుక్కల హోటల్స్. ధనమంతా ఇంధనమవుతూ నిదురంటూ ఎరుగని రాత్రి, ధనమంతా ఇంధనమవుతూ నిదురంటూ ఎరుగని రాత్రి. ఇది దగదగలాడే నగరం, ఇది దగదగలాడే నగరం. నికరంగా లేని కొలువు అలుపసలే తీరని బతుకు, నికరంగా లేని కొలువు అలుపసలే తీరని బతుకు. లేనోని శ్రమ సబ్సిడై లే చురుకులు పరుగుల నగరం, లేనోని శ్రమ సబ్సిడై లే చురుకులు పెట్టే నగరం. ఇది భగ భగ మండే నగరం, ఇది భగ భగ మండే నగరం, ఇది ధగధగ మెరిసే నగరం, ఇది ధగధగ మండే నగరం. నల్లని పల్లెల సిగలో నగలాగా ఉండే నగరం, నల్లని పల్లెల సిగలో నగలాగా ఉండే నగరం. ఈ రొక్క బతుకుల గురుతై పేరొంది నిలిచే నగరం, ఈ రొక్క బతుకుల గురుతై పేరొంది నిలిచే నగరం. పలువాగులు కలిసిన నదిలా పాటయ్యి పారే నగరం, తన నాగరికతను వదిలేస్తే. పలువాగులు కలిసిన నదిలా పాటయ్యి పారే నగరం, తన నాగరికతను వదిలేస్తే. తను చచ్చిన మురుగుల గుంట, ఇది భగ భగ మండే నగరం, తను చచ్చిన మురుగుల గుంట. పలువాగులు కలిసిన నదిలా పాటయ్యి పారే నగరం, తన నాగరికతను వదిలేస్తే. తను చచ్చిన మురుగుల గుంట. ఇది భగ భగ మండే నగరం, ఇది భగ భగ మండే నగరం. మరి ఏం చేయాలి? మనం ఒకరికి ఒకరం తోడై మనసులను మతులను కలిపి, మనం ఒకరికి ఒకరం తోడై మనసులను మతులను కలిపి, పట్టానికి పల్లెకు నడుమ తెగిపోయిన పేగును కలిపే ప్రతి ఒక్కరికి పనికొచ్చే బతికుండే నగరం కోసం, ప్రతి ఒక్కరికి పనికొచ్చే బతికుండే నగరం కోసం. చేయి కలిపి చేయి కలిపి పలు తీరుల పాటే పడితే మాణిక్యంలాగా నగరం, మరి దగదగ మెరియును నగరం, మరి మంటలు లేని నగరం, మాణిక్యం లాంటి నగరం. దగదగ మెరియును నగరం, దగదగ మెరియును నగరం, దగదగ మెరియును నగరం. ఇది దగదగ మెరిసే నగరం, ఇది భగ భగ మండే నగరం, ఇది భగ భగ మండే నగరం, నగరం నగరం. Please translate it for us. It's very difficult to translate. I will try. Yes, Vagish will have to really help me by reading it slowly. This is one of the interesting things about Hyderabad is that
this is a region in which alliteration has been used very, very effectively for communicating very complex ideas in a very simple way. We have a long tradition of that. In fact, not just one tradition, there are several traditions of doing this. And Vagishan, incidentally, he's a professor in the National University of Law here. He teaches in the law school, he teaches political science. But for a very long time, he has been very closely studying all of these different traditions, popular traditions, folk traditions of singing, writing, and so on and so forth. And there's so many occasions when Vagishan suddenly calls me up at night, in the morning, and says, I have a new song. And he has to read it to me. And the occasions are actually very, very interesting. The students in his class are done with the entire semester's work, they're going home and they need a farewell. And Vagishan has a song. The students in his class are not working, he has a song. he throws songs at them to get them to work, he throws songs at them to get inspired, he throws songs at them for anything. That's what he's been doing for a long time. So I'm not very surprised. He actually promised to do this song about a couple of weeks ago. Then he completely went out of touch, contact, complete radio silence for 2 weeks. And then suddenly one morning he calls me up and says, "Kal raat ko 12 baje mere ko mil gaya." He got the first 2 sentences and then he got the whole of it. So when I'm saying alliteration, we actually had a lot of this last year at Dodin also, in the Dakhni poetry, where people were playing on the sound of words. So the first two lines, which all of you would be remembering, Dhagadaga Bhagabhaga. In Telugu, Dhagadaga is always used to indicate something that is glittering, something that is dazzling. So when you have gold, when you have diamonds, when you have a lot of jewelry on you, when something is very precious, it's dazzling. That's when you use the sound Dhagadaga. And you use the sound Bhagabhaga when you want to indicate that something is burning. It's burning like an inferno, right? When you eat a lot of chilies, your mouth is burning. That's when you say Bhagabhaga, right? So he's basically saying in the first 2 sentences, he's communicating to you the whole city. One, it's dazzling. One, it's burning. That's the contrast. At the same time as it seems to be dazzling, it's also burning like an inferno. ఊరేమి ఉండమనని వేరెవరు రమ్మని అనని చిరునామా లేని మనిషి మరి మెతుకులకు ఇక్కడ వెతికి. So even when the village to which you belong says that stay here, It doesn't ask you to stay, and nobody welcomes. right. So nobody cares. Basically, the city is indifferent. It's completely indifferent to you. It doesn't care whether you're here, whether you leave. You are anonymous. You don't have an address. Even then. Even in a situation like that, you're compelled to stay here because you have to search for your dana. You need those few morsels of food. That's why you stay here. Not because the town is saying you stay here, not because somebody is asking you to come here. Nothing, it doesn't care. You're a nobody to the town. And yet you stay here without an address because this is where you can earn that little bit to support your food. This is a town that is the shelter for higher education, for big dreams, but it's also the town where it's a shelter for all of the dreams of the poor man. For the rich people, it's a plate of gold in which you eat. For the rich people, it's the cot, it's that big palang jiske upar sote hain, jo katya hota hai. That's the kind of cot. It's a great luxurious bed. That's what the city is. And it is like that only for those who are wealthy, who are affluent. సౌకర్యాలుండే ఇల్లు, సదుపాయాలుండే కాలనీస్, మేడలు, టవర్లు, బంగ్లాలు, డెకరేటెడ్ గేటెడ్ villas.
So there are colonies which have amenities. There are towers, there are gated communities, there are villas which have everything that they could ask for. All the facilities, all the amenities, everything. గుడిసే వాడ బస్తీ గురుకున్నా లేని స్లమ్. Jhopadpatti, Basti, whatever you want to call it, without any kind of identity, without any kind of memory, that is the place where people live. ఇరుకు మురికి దుమ్ము కానీ మొండిగా బతికే దమ్ము. It's congested, it's dirty, and it has quality. It's unpleasant, right? With all of that, even with all of that, you still have the dum. जीना है यहीं पे, यहाँ से हटेंगे नहीं. నికరంగా లేని కొలువు. There is no security to the job. అలుపసలే తీరని బతుకు. Your life doesn't know any kind of rest. లేనివని శ్రమ సబ్సిడీ లే చురుకులు పెట్టే నగరం. It's the labor of the man who doesn't have anything which subsidizes this city, which seems to be able to jog and run. హైటెక్ లిక్కుల మాల్స్, 5 చుక్కల ఆ హోటల్స్, ధనమంతా ఇంధనం అవుతూ నిధులంటూ ఎరుగని రాదు. Nikku means actually pride, something that when you look down on something. So this is a city that takes pride in its being high-tech. It looks down on everything else. What's the rest? ఈ ధనమంతా ఇంధనం అవుతూ నిధులంటూ ఎరుగని రాదు. This is the city where money just simply becomes fuel and people don't sleep. నల్లని పల్లెల సిగలు నగలాగా ఉండే నగరం తీరొక్క బతుకుల గురుతై పేరొంది నిలువగ నగరం. పేరొంది నిలిచే నగరం. Nallani Pallelu, dark villages all around Hyderabad city. You walk around, if you look at it from a plane, you'll see a cluster of lights, and all around it is darkness, and that's where the villages are. It's like a big jewel in the hair, in the dark black hair, which is the villages. It's a city that takes pride in it. It gets fame because of that glittering quality. తీరొక్క బతుకుల గురుతై పేరొంది నిలిచే నగరం. అనేక many palms of life. So this is a city for many different diverse forms of life, and that's how it gets its fame. పలు వాగులు కలిసిన నదిలా పాటయ్యి పారే నగరం. It's a city which is this is a very complex idea. When several different streams join together, it becomes a river. It's like that, but it's like a song in which several different voices have come together to become one single song. The city is like that. తన నాగరికతను వదిలేస్తే తను చచ్చిన మురుకుల గుంట. A city like that, which is essentially several different voices joining together to become the song of river or the river of songs. If that city forgets its civilization, forgets its civility, forgets to be civil to other people, if it refuses to recognize and acknowledge other people's existences, then it just simply becomes a drain. A drain. That's all it is. It's a cesspool. మనం ఒకరికి ఒకరం తోడై మనుషులను మతులను కలిపి. If we can all work together, if we can make our hearts and our minds come together, పట్నానికి పల్లెకు నడుమ తెగిపోయిన పేగును కలిపి. Tegipoina Pegu is again a very complex idea. Pegu means intestine, and you say, huh? Yeah, I mean, evocatively it also means the umbilical cord. So if the umbilical cord that connects the village to the town is broken, when that is broken, somebody has to make the effort of actually linking them back together again. And if we can put our hearts and our minds together to bring the two back together somehow if we can reconstruct that relationship, then ప్రతి ఒక్కరికి పనికొచ్చే బతికుండే నగరం కోసం. Then it will be a city that will be living for everyone. It will be a city in which everyone
will be for everyone else. That's the kind of city that will emerge from that. చెయ్యి చెయ్యి కలిపి పలు తీరుల పాటే పడితే If we can put shoulder to shoulder, if we can join hands and then struggle together, మాణిక్యం లాగా నగరం మరి then again you will get that city which will be like a jewel, like a gem, and it will glitter again without all of this clutter. वागीशन जी के बाद मैं रिक्वेस्ट लाजवंती जी टू प्लीज इंट्रोड्यूस द मदर. Her name is Kusum Gauri. My name is Bhashwati Sengupta. And while I was researching my project, searching for sparrows, I always discuss it with her, and she has a lot of really beautiful input. And one of the things that she introduced me to was poetry of Iqbal. She has a degree in Urdu. Her master's was in Urdu. So both my parents have introduced Urdu to us in many different ways. So she's going to read a poem which talks about birds in Iqbal's poetry. And if we have time, also translate. We were doing a workshop in the front, listening to the sounds of the city, and she had translated that into the little blurb that I had into Urdu, and we worked on this together. And we'll see whether we can do both. परिंदे की फरियाद. एक बर्ड अपनी रिक्वेस्ट रख रही है. ये डॉक्टर इकबाल, अल्लामा इकबाल की जुमला पोइट्री में से एक सेलेक्टेड है जो मुझे बहुत पसंद है. और ये बच्चा अपने ख्याल जाहिर कर रहा है इसमें. आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना. आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना. लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस्म, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना. वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना. आई नहीं सदाएं इसकी मेरी खपस में, आती नहीं सदाएं इसकी मेरे खपस में. होती मेरी रहाई है काश मेरे बस में. क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी नहीं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ. आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही है, आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं. मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ. इस खैर का इलाही टुकड़ा किसे सुनाऊँ, इस खैर का इलाही टुकड़ा किसे सुनाऊँ. डरे यहीं कपस में मैं गम से मर न जाऊँ. जब से चमन फूटा है ये हाल हो गया है. दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है. गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले. टूटे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है. आज़ाद मुझको कर दे वो खैर करने वाले, आज़ाद मुझको कर दे वो खैर करने वाले. मैं बेज़बां हूँ खैदी तू छोड़ कर दुआ ले, मैं बेज़बां हूँ खैदी तू छोड़ कर दुआ ले. आता है याद मुझको गुजरा हुआ. बच्चे की दुआ. छोटा बच्चा बच्चे की गॉड से दुआ कर रहा है बच्चे के लिए. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत को खुदाया मेरी. दूर दुनिया से मेरे गम, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए. हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए. हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत. जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत. जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब. इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब. वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना,
दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ऐ मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो इस राह पे चलाना मुझको। ऐ नेक जो राह है इस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में। क्या बात। शहर की आवाज़ को सुनो। क्या तुम सोच सकते हो कि शहर की एक बेजान की आवाज़ हो सकती है? अब ज़रा गौर करो, कहीं भी खामोशी मौजूद नहीं। शहर में एक भी जगह ऐसी नहीं जहाँ खामोशी हो। हमारी रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी की मुसलसिल असर पजीर हो रही है। इस शहर की ज़िंदगी की इतर बितर आवाज़ की गूंज से अक्सर वो बेशतर हम ये नहीं मान सकते कि ये जो इस आवाज़ का सर चश्मा आखिर कहाँ है, इसका वजूद कहाँ है। इस बेतरतीब आवाज़ जो हमारे पास फैली हुई है, ये आखिर कहाँ से आ रही है, इसका सर चश्मा कहाँ है। कभी कभी तो ये आवाज़ हमारी ज़िंदगी के लिए बेइंतहा अहमियत रखती है। चंद आवाज़ें तो हमारे गुजरे हुए वक्त और मौसम पर असरअंदाज होते हैं, यानी आवाज़ें हमारी निजी ज़िंदगी से वाबस्ता होती हैं। जिस तरह हमारे शहरी ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात हमारे हालात तब्दील करते या बदलते रहते हैं, नज़र आते हैं। ज़िंदगी की पर्दे पर आती हुई नज़र आती है। ज़िंदगी के पर्दे पर तस्वीरें आती जाती नज़र आती हैं। यही है आवाज़, यही ऐसी ही आवाज़ वो भी गुजरती है। जैसे चंद आवाज़ें सामने से गायब होती हैं, वो भी नज़र आती हैं, और चंद आवाज़ें उभरती हुई ये गूंजती आने वाली आवाज़ें में जम हो जाती हैं। यानी हमारी जो आवाज़ जो हम सुनते हैं वो क्या है, खुद में जम हो जाती है, उसमें मिल जाती है। आने वाली नई आवाज़ और जाती हुई गुजरती हुई ये आने जाने वाली आवाज़, नहीं आने वाली आवाज़ एक रूप से उभरती हुई नज़र आती है। जैसे सुबह का सूरज उभरते नज़र आता है, वैसे ही आवाज़ की गूंज भी एक सिम से उभरती और फिर दूसरे तरफ गायब हो जाती है। इस शहरी ज़िंदगी में लाखों की तादाद में लोग चलते फिरते रहते हैं। इस शहर की अफरा तफरी में आवाज़ की गूंज, अलग अलग आवाज़ की लहरें उठती रहती हैं। यही आवाज़ की यही लहरें हमारी नई जिंदगी के लिए एक माहौल पैदा करता है। ये हमारे बड़े शहरों की आवाज़ की गूंज है। अब हम इससे ये जानना चाहते हैं कि तितर बितर मुस्तहिल शहर की गूंज हमें ये आवाज़ें किस तरह असर पजीर करती हैं। वो क्या चीज़ है जो हमें इस शहरी ज़िंदगी से मुतासिर करती हैं। हमारा ज़िंदगी से भरा हुआ तसद्दुम किस तरह हमारी ज़िंदगी के गोल मकसद हासिल करने में और हमें इस माहौल से मिलजुल कर रहकर एक मसावत ताल्लुकात को कायम रखने ये आवाज़ें मददगार हो सकती हैं। मुझे बताया गया कि युवा के साथी यहाँ पे हैं, तो उसे मैं रिक्वेस्ट कर प्लीज़ टू कम एंड आई वाज टोल्ड एक गीत यहाँ पे रखने वाले हैं। क्या देना चाहूँगा, यहाँ पे एक गाना प्रस्तुत करने का मौका दिया है। जनरली युवा की टीम का हमेशा से ये रवैया रहा है कि जब हम बस्तियों में जाते हैं, बस्ती सभाएं करते हैं, तो लोगों में जोश लाने के लिए, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए कुछ सॉन्ग्स हम गाते हैं, गाने गाते हैं। अधिकांश तौर पर वो मराठी रहते हैं, कभी कभार हिंदी भी रहते हैं। तो अभी हमारी टीम जो है वो एक आध ही मराठी गाना आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट पूजा एंड साथियों नमस्ते। ये जो गीत गाने जा रहा हूँ, सांगा आम्हाला बिरला बाटा टाटा कुत्ते है। जो बिरला है, टाटा है, बाटा है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े श्रीमंत लोग हैं, उनके रहने की जो तरीका है, और हम आम जो गरीब लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, उस बारे में ये गीत में बताया गया है। तो आपके सामने हमारी युवा की टीम साथ आप सुनेंगे, ऐसे में आशा। अरे सांगा माला बिरला बाटा टाटा कुठाय वो, अव सांगा माला बिरला बाटा टाटा कुठाय वो, सांगधनाचा साठाने आमचा वाटा कुठाय वो, अव सांगधनाचा साठा
लुगड्यावर अहो या दुबळ्याचा धुडका पडका ढाटा कुठाय हो अहो या दुबळ्याचा धुडका पडका ढाटा कुठाय हो सांगा धनाचा साठण आमचा वाटा कुठाय हो सांगा धनाचा साठण आमचा वाटा कुठाय हो अहो दुकानवाले दादा आमचा वाटा कुठाय हो अहो दुकानवाले दादा आमचा वाटा कुठाय हो सांगा धनाचा साठण आमचा वाटा कुठाय हो सांगा धनाचा साठण आमचा वाटा कुठाय हो इथं मीठ मिरची आणि तुरी इथं मीठ मिरची आणि तुरी इथं मुर्गी काटा सुरी इथं मुर्गी काटा सुरी अहो सांगा मला मुर्गी कटलेट काटा कुठाय हो अहो सांगा मला मुर्गी कटलेट काटा कुठाय हो सांगा धनाचा साठण आमचा वाटा कुठाय हो सांगा धनाचा साठण आमचा वाटा कुठाय हो अहो सांगा मला बिर्ला बाटा टाटा कुठाय हो अहो सांगा मला बिर्ला बाटा टाटा कुठाय हो सांगा धनाचा साठण आमचा वाटा कुठाय हो सांगा धनाचा साठण आमचा वाटा कुठाय हो सांगा धनाचा साठण आमचा वाटा कुठाय हो धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसा गाना है जिसमें एक आम आदमी आके सवाल पूछना चाहता है शहर के अमीरों को, शहर के धनिकों को, कि आपके पास इतनी सारी दौलत है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे भूखे लोग हैं, नंगे सोए हैं, रोड पे सोए हैं, क्या उनके लिए आपके पास कुछ है? क्या आपके मन में दया है? क्या उनके लिए आपके पास कुछ सवाल है, जवाब है? Birla Tata Bata basically refers to the big industrialist in Bombay, and through this song, the common man wants to ask, could you please tell us where is our share of money, where is our share in the prosperity of the city? We have given our blood and sweat for the city, and all the money is being usurped by you guys. So where is our share in this prosperity of the city? So जब हम राइट टू सिटी का ऐलान करते हैं, राइट टू सिटी का एक बहुत उम्दा स्टेटमेंट करते हैं, तो उसकी एक साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में इस गाने को सोचा जाता है, इस गाने के बारे में विचार किया जाता है। मीट भाकरी is like a common man's food in Bombay, and compared to which in a song there is reference about murgi cutlet. So that simply shows about the food culture of Bombay also, the food that is consumed by the rich and food that is obviously consumed by the poor people. So giving references to the food culture, the culture of the common man and culture of the poor in the city, the song tries to raise many questions, and generally it becomes a fantastic note to start a meeting or a basti sabha. So that was a presentation from Yuva. Thank you very much. इसके बाद मुझे कहा गया है कि एक गीत मुझे सुनाना है, तो मैं वो गीत सुना देता हूँ। और लेकिन उसके पहले एक सूचना है कि मेरे गीत के बाद में फिर सब लोग तुरंत हॉल में जाएंगे, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन होना है और फिर साथियों को दिल्ली निकलना है, इसलिए सबको एयरपोर्ट के लिए रवाना होना होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर कल परसों भी आप लोग को और प्रेजेंटेशंस देखने पड़ेंगे, इसलिए इधर उधर ना जा करके सीधे सब लोग हॉल पे जाएंगे। ये जो गीत है ये दरअसल ग्रीवांस रेड्रेस के लिए एक कानून की मांग करते हुए लिखा गया था, क्योंकि ये हर शहर की सच्चाई है और गाँवों की भी, कि जो एक चीज़ अधिकतम लोगों को कनेक्ट करती है वो ये है कि हम सब के पास अर्जियां हैं, हम सब के पास आवेदन हैं, हम सब के पास सुविधाओं का अभाव है और हम उनके लिए मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों को मिलनी थी सब सुविधाएं, खुलने थे रास्ते सारे, मिटनी थी सब बाधाएं, पर बाधाएं अब हर दफ्तर का रास्ता रोके हैं, झूठे हैं वादे सारे, सारे दावे धोखे हैं। हम लोगों के आवेदन को क्या कोई न्याय मिलेगा, तकलीफों को कम करने का कोई उपाय मिलेगा, कब तक सिसकेंगे बच्चे
भूखे चक्कर काटेंगे, कब तक हम लोगों के हक मिलकर दीमक चाटेंगे। अरे कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी, कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी, कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी, कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी। अरे दफ्तर में चलती है केवल बाबूजी की मर्जी, दफ्तर में चलती है केवल बाबूजी की मर्जी। कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी, कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी। दूर बहुत था राशन दफ्तर, वहां पे बैठा था एक अफसर, अफसर ने चश्मे से देखा, लेकर आया था मैं लेखा। अफसर ने फिर कलम चलाई, बोला तुम कल लाना भाई, कल के चक्कर में आता हूँ, साल हुआ हर दिन जाता हूँ, राशन कार्ड के नाम से ही हो गई है एलर्जी। कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी। अरे दफ्तर में चलती है केवल बाबूजी की मर्जी, कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी। बोले वेलफेयर अधिकारी, लेकर आना तुम तरकारी, तभी सुनेंगे हम फरियाद, आना लंच ब्रेक के बाद। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे इन्होंने ठगा नहीं है, मरते दम तक मिली न पेंशन, अस्पताल में दवा नहीं है, बच्चों को भी पता नहीं है कहाँ गए मास्टर जी। कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी। अरे दफ्तर में चलती है केवल बाबूजी की मर्जी, कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी। एसडीएम की गाड़ी आई, चपरासी ने आंख दिखाई, सुनवाई तो कर लो सर जी, बाकी फिर कानून की मर्जी। देखा और पलटकर बोले, बनते हो क्यों इतने भोले, तुमसे पहले कई खड़े हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े बड़े हैं, सब सुविधाओं की बातें निकली हैं अब तक फर्जी। कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी, कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी, कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी। ना हमने होटल मांगे, ना हमने मांगी गाड़ी, ना मांगे हैं कोट पैंट, ना लाख टके की साड़ी, ना महलों का सुख मांगा, ना बड़े बड़े बंगलों का। अरे इतना तो सोचो तुम, क्या हाल है हम कंगलों का। सपनों में है रोटी और सपनों में है एक बस्ता, मांगी है पेंशन, मांगा है चलने को एक रास्ता। इन सपनों को कभी तो अपनी आंखों से भी देखो, कैसी लापरवाही है ये, कैसी है खुदगर्जी। कहाँ लगाएं अर्जी बोलो, कहाँ लगाएं अर्जी। दफ्तर में चलती है केवल बाबूजी की मर्जी, दफ्तर में चलती है केवल बाबूजी की मर्जी। कहाँ लगाएं अर्जी, कहाँ लगाएं। क्या बात।